Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss very important topics: intensity distribution in the transmitted light, sharpness of fringes in Fabry-Perot interferometer, and comparison of Fabry-Perot fringes with that of Michelson interferometer fringes. In wave optics, chapter interference of light for BSc Part 2 Physics in lecture number 9. First of all, we have to derive the expression for intensity distribution in the transmitted light of Fabry-Perot interferometer fringes. To derive this expression, that is the expression for intensity, suppose capital T and capital R be the fractions of the incident light intensity which are transmitted and reflected at each silvered surface. T and capital R are also called transmittivity and reflectivity. Transmitted and reflected amplitudes will be root under T and root under R respectively. We know that intensity of light is equal to the amplitude. Its intensity of light is directly proportional to its square of the amplitude. Therefore, amplitude of light is directly proportional to the square root of the intensity of light. तो इस सिचुएशन में कैपिटल टी ट्रांसमिटिविटी है एंड कैपिटल आर रिफ्लेक्टिविटी है. जो लाइट इंसिडेंट होता है ग्लास प्लेट, सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, फर्स्ट ग्लास प्लेट ए पर डिस्टेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से, तो उस इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है एंड कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है. तो जो फ्रैक्शन इंसिडेंट लाइट का ट्रांसमिट होता है उसे ट्रांसमिटिविटी भी कहा जाता है, वह कैपिटल टी है सपोज किया गया. एंड इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी का जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है ईच ऑफ द इनर सरफेसेस से, तो दैट इज रिफ्लेक्टिविटी, वह कैपिटल आर है. देयरफॉर फ्रैक्शनल ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड्स होगा रूट अंडर टी एंड रूट अंडर आर respectively, because amplitude is directly proportional to the square root of the intensity of light. Now the amplitudes of the successive rays transmitted through the pair of plates A and B are given by will be AT for the first transmitted beam, light beam, ATR for the second transmitted ray, and ATR square for the third transmitted ray, ATRQ for the fourth transmitted ray, and so on, where A is the amplitude of the incident light. Since A इंसिडेंट लाइट का एम्पलीट्यूड है जो ग्लास प्लेट ए पर इंसिडेंट होता है एट एन एंगल थीटा टू द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे. सो AT will be the amplitude of the first transmitted ray through the glass plate, second glass plate B. ATR is the amplitude of the second transmitted ray. ATR square is the amplitude of third transmitted ray. इसलिए कि जब फर्स्ट लाइट रे ट्रांसमिट होता है, फर्स्ट जो ट्रांसमिटेड लाइट बीम है, तो उसका इंसिडेंट लाइट जब इंटर करता है प्लेट ए से होकर के, तो जब बी पर इंसिडेंट होगा, बी प्लेट के इनर पोर्शन पर इंसिडेंट होगा,
तो चूंकि बी का इनर सरफेस थिनली सिल्वर्ड है, इसलिए कुछ पार्ट लाइट का ट्रांसमिट हो जाएगा एंड रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर यह रिफ्लेक्टेड लाइट ग्लास प्लेट ए, जो लेफ्ट ग्लास प्लेट है, उस पर इंसिडेंट होगा, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर सेकेंड ग्लास प्लेट, सिल्वर्ड ग्लास प्लेट बी पर इंसिडेंट होगा। तो फिर से इसका कुछ पार्ट लाइट रे का ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। देयरफॉर द amplitudes of the successive transmitted rays through the pair of plates, glass plates, parallel glass plates A and B will be ATR for the second transmitted ray, ATR square for the third transmitted ray, ATRQ for the fourth transmitted ray, and so on, where A is the amplitude of the incident light. Incident light का amplitude कितना है? Small a है. Now we know that the path difference between two successive transmitted ray is 2d cos theta, which we have already discussed in the working of Fabry-Perot interferometer in the last video. This video is part 2 of Fabry-Perot interferometer. So phase difference between two successive transmitted light ray, say transmitted light ray number 1 and transmitted light ray number 2, is delta equals to 2 pi by lambda into path difference, and path difference between, therefore phase difference, which is denoted by the symbol delta, is equal to 2 pi by lambda into path difference. This is the formula. That is relation between phase difference and path difference. Therefore delta equals to phase difference between two successive transmitted light rays between the pair of two plates, parallel glass plates A and B, is delta is equal to 2 pi by lambda multiplied by path difference is 2d cos theta, and suppose it is equation number 1. Now if the incident light wave is represented by y is equal to a small a e to the power I omega t, where small a is the amplitude of the incident light wave, then the transmitted waves through a pair of glass plates reaching at point P of the screen will be can be represented as y1, which is the displacement of the first transmitted light wave. y1 equals to a t e to the power I omega t. Since the amplitude of the first transmitted light wave is at, and displacement of the second transmitted light wave between a pair of two parallel glass plates A and B is y2 equals to ATR. It is the amplitude of the second transmitted light ray, ATR, which we have already discussed in this video. E to the power minus I under bracket omega t minus delta, where delta is the phase difference between the second transmitted light wave and first transmitted light wave, and second transmitted light wave is phase angle delta behind the first transmitted ray, so minus sign is taken. क्योंकि सेकेंड ट्रांसमिटेड लाइट रे और लाइट वेव बाद में प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट लाइट वेव के ट्रांसमिट हो जाने के बाद, इसलिए सेकेंड ट्रांसमिटेड लाइट वेव पी पॉइंट पर बाद में पहुंचेगा, तो इसलिए फेज एंगल
वह फेज में बिहाइंड होगा, मतलब सेकेंड ट्रांसमिटेड वेव फेज में जब पी पॉइंट, स्क्रीन के पी पॉइंट पर पहुंचेगा तो वह पीछे होगा, बिहाइंड होगा, इसलिए माइनस डेल्टा, दैट इज फेज एंगल between any two transmitted light ray is delta. Here delta is the phase angle between the first and second transmitted light ray. And similarly we can express the displacement of third transmitted light wave between a pair of two parallel glass plates A and B is Y3 equals to AT R square e to the power minus I ओमेगा टी माइनस, अब फिर से माइनस डेल्टा, मैंने फिर से डेल्टा फेज एंगल अब सेकेंड ट्रांसमिटेड लाइट वेव एंड थर्ड ट्रांसमिटेड लाइट वेव के बीच में एपियर होगा। तो पहले था डेल्टा शुरू में फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांसमिटेड लाइट वेव के बीच में, अब फिर से डेल्टा फेज एंगल एपियर हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया सेकेंड ट्रांसमिटेड लाइट वेव एंड थर्ड ट्रांसमिटेड लाइट के बीच में। तो टोटल फेज एंगल दैट इज ई टू द पावर माइनस आई अंडर ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस डेल्टा एंड डेल्टा दैट इज माइनस टू डेल्टा एंड सो ऑन। इसी ढंग से फर्दर आगे भी एक्सप्रेस किया जा सकेगा डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ फोर्थ ट्रांसमिटेड लाइट बीम, light wave, fifth transmitted light wave and so on. So we can write here after y3 dot dot dot, that is so on. Now by using the principle of superposition, the resultant amplitude of the transmitted waves is given by capital A equals to AT first term plus AT capital R e to the power minus I delta plus AT R square e to the power minus I 2 delta and so on. Amplitude, since amplitude is the maximum displacement and mod of e to the power I omega t, that is mod of cos omega t plus I sin omega t equals to root under cos square omega t plus sin square omega t, that is since cos square omega t plus sin square omega t is 1, therefore root 1 that is 1. So mod of e to the power I omega t is 1, therefore we will left with the resultant amplitude A equals to, in the first term AT, only AT, in the second term that is the amplitude of the second transmitted wave ATR e to the power minus I delta, third term is AT capital R square e to the power minus I 2 delta and so on, since mod of e to the power I omega t is equal to 1, because the resultant amplitude is the maximum displacement. So A equals to AT plus ATR e to the power minus I delta plus AT R square e to the power minus I 2 delta. Next term will be AT RQ e to the power minus I 3 delta and so on. And in RHS AT is common, AT is present in each term, so AT is taken out of the bracket. So AT is common. Now first term is 1, second term is R, capital R is the reflectivity, that is portion of the light wave, incident light wave reflected. So second term is capital R e to the power minus I delta, third term is R square e to the power minus I 2 delta and so on. Now the bracketed terms represent a series of geometric progression. First term is A and common ratio between any two successive terms is R e to the power minus I delta. After dividing R square e to the power minus I 2 delta by capital R e to the power minus I delta, we will obtain capital R e to the power minus I delta. Further dividing RQ e to the power
minus I 3 delta by r square e to the power minus I 2 delta, we will get the same common ratio, that is capital R e to the power minus I delta. So it is first term is sum of these terms in geometric progression. The formula is AT multiplied by under bracket A upon first term upon 1 minus R, that is 1 minus common ratio. First term is 1 upon 1 minus common ratio is R e to the power minus I delta. This is the resultant amplitude of the transmitted light waves. And suppose it is equation number 2. Now complex conjugate of this amplitude is A star. So complex conjugate of the resultant amplitude is A star. We can write it as AT under bracket 1 upon 1 minus R capital R e to the power, in place of I e to the power minus I delta, now we have to write e to the power plus I delta for the complex conjugate of the resultant amplitude. Hence the resultant intensity of transmitted light waves is capital I equals to capital A multiplied by A star. A star is the complex conjugate of the resultant amplitude A, and it is A is given by AT, a small a into capital T upon 1 minus capital R e to the power minus I delta multiplied by A star is complex conjugate of the resultant amplitude is AT upon 1 minus capital R e to the power plus I delta, or the resultant amplitude capital I is AT in the numerator, AT into AT, that is A square T square in RHS, and in the denominator it is 1 minus capital R e to the power minus I delta multiplied by 1 minus capital R e to the power plus I delta. After multiplying both, we will get 1 plus capital R square minus capital R e to the power plus I delta minus capital R e to the power minus I delta, or capital I equals to A square, small a square, capital T square upon 1 plus R square minus कैपिटल आर बोथ टर्म्स में प्रेजेंट है, लास्ट टू टर्म्स में, तो आर कॉमन हो जाएगा, तो वी कैन राइट माइनस आर ई टू द पावर प्लस आई डेल्टा प्लस ई टू द पावर माइनस आई डेल्टा. नाउ we have capital I equals to A square T square upon 1 plus capital R square minus R multiplied by e to the power plus I delta plus e to the power minus I delta is 2 cos delta. So it is 2 cos delta. So 2 cos delta in place of e plus I delta plus e to the power minus I delta, we can write 2 cos delta. So resultant intensity of the transmitted light waves which meet at point P of the screen is capital I equals to A square upon T square upon under bracket 1 plus capital R square minus 2R cos delta. Now denominator of this equation can be written as, or capital I equals to A square T square upon 1 plus 1 minus R का होल स्क्वायर, 1 माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर प्लस 2R माइनस 2R cos डेल्टा. सो
2r को हम कॉमन कर सकते हैं, तो वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर, 1 माइनस r टू द होल स्क्वायर, और प्लस 2r, टू कैपिटल R, 1 माइनस कॉस डेल्टा। 2r टर्म, 2r कॉस लास्ट टर्म में भी प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में इंटेंसिटी का, और 1 प्लस आर स्क्वायर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2r, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 1 माइनस, डिनोमिनेटर को लिखा जा सकता है 1 माइनस कैपिटल R होल स्क्वायर प्लस 2r 1 माइनस कॉस डेल्टा, डिनोमिनेटर टर्म इन RHS ऑफ intensities. So now we have we can write further as capital I equals to a square capital T square upon 1 minus r whole square plus 2r, and 1 minus cos delta can be written as 2 sin square delta by 2 using the formula. So it is a square T square upon 1 minus capital R square plus 2r multiplied by 2 sin square delta upon 2 sin square delta upon 2, 1 minus cos delta is, now it is, that is resultant intensity is capital I equals to a square capital T square, and in the denominator we have 1 minus capital R whole square plus 2r into 2, that is 4r sin square delta upon 2. Now we can write further as capital I equals to a square T square upon 1 minus r square can be taken out of the bracket. So we can write further capital I equals to a square capital T square upon 1 minus r whole square, और इसे कॉमन कर लिया जाए, इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट. सो इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इज 1. अब ब्रैकेट में पहला टर्म 1 होगा, क्योंकि 1 माइनस कैपिटल आर होल 1 माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया है, कॉमन कर लिया है. तो फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट के अंदर 1 होगा, एंड सेकेंड टर्म में चूंकि 1 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, तो 1 माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा उस टर्म में. तो वी हैव 4r, सेकेंड टर्म में होगा 4r साइन स्क्वायर डेल्टा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर. ये टर्म हो गया इंटेंसिटी के लिए. इस टर्म को हमने एक्सप्रेस किया 1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ Fabry-Perot interference fringes, that is capital I equals to a small a square capital T square upon 1 minus r whole square, 1 minus r to the whole square under bracket 1 plus 4r sin square delta by 2 upon 1 minus capital R whole square. And suppose it is equation number 4. We have already used 3 equations. Now it is equation 4, which is the final expression for intensity distribution of Fabry-Perot fringes. From this equation, that is equation number 4, that is intensity formula, we can obtain the maximum intensity and minimum intensity. For minimum intensity, sin square delta upon 2 is equal to 0, that is delta is equal to 2 n pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3 integers. So I minimum will be I min will be a square T square upon 1 minus r square only. Since sin square delta for minimum intensity, sin square delta by 2 is equal to 0. And for maximum intensity, we will put sin square delta by 2 is equal to
1, in that case we will obtain the maximum intensity, which will I max is equal to a square t square upon 1 minus r whole square under bracket 1 plus 4r upon 1 minus r capital R ka whole square. This will be the maximum intensity. This will be the maximum intensity, which will equal to a square t square upon 1 plus capital R square after simplification. So write down minimum intensity, minimum resultant intensity of transmitted light beam, which are superimposed at point P of the screen. We have I mean equals to a square t square, small a square capital T square upon 1 minus capital R whole square, 1 minus capital R का whole square, 1 plus under bracket 1 plus 4R multiplied by for minimum intensity at point P, that is for the destructive interference sin square delta by 2 is equal to 0. So it is 4R upon multiplied by 0 upon 1 minus capital R square. So we will left with only minimum intensity of light at point P on the screen is a square t square, a small a square t square upon 1 minus capital R square only. And this is equation number 5, which we have obtained from the intensity distribution formula for Fabry-Perot interference fringes given by equation number 4, which is the general equation, main equation for intensity, resultant intensity of the transmitted light, which are meeting at point P of the screen. So minimum intensity is a square I mean is equal to a square t square upon 1 minus capital R square. This is the minimum intensity of light at point P of the screen. And for maximum intensity, we have I max equals to, now putting sin square delta by 2 is equal to 1, because value of sin theta is, maximum value of sin theta is, for maximum value of theta, sin theta is 1 and minimum value is 0. So maximum value of sin theta is 1. So putting sin square delta by 2 is equal to 1 in the denominator of equation 4, we will get a square I max is equal to a square t square upon 1 minus capital R square under bracket 1 plus 4R 1 plus 4R multiplied by putting sin square delta by 2 is equal to 1. So it is 1 upon 1 minus capital R square. And after simplification, we will obtain the maximum intensity I max as a square, a small a square capital T square plus upon 1 plus capital R का whole square, that is I max. Therefore I max equals to a square T square upon 1 plus R का whole square, and this is the say it is equation number 6, which gives the maximum intensity of the transmitted beam, transmitted light waves meeting at point P of the screen. Now from equations 5 and 6, which that is from the equations from the expression for minimum intensity and maximum intensity, we will obtain the expression for visibility of Fabry-Perot fringes as given by V equals to I max minus I mean upon I max plus I mean equals to 2R upon 1 plus R square. That is visibility of Fabry-Perot FP fringes is obtained by using equations 5 and 6, that is V, capital V, the symbol of visibility is I max minus I mean upon I max plus I mean. After putting the values of I max from equation 6 and I mean from equation 5, we will obtain
the final result as 2 capital R is the reflectivity, that is fraction of light wave, incident light wave reflected, the 2R upon 1 plus R square. So it is 2R capital R plus 1 plus capital 2 capital R upon 1 plus R square. This is the expression for visibility of Fabry-Perot FP fringes. Capital V is equal to I max minus I mean upon I max plus I mean. After simplification, using equations 5 and 6, we will obtain 2R visibility V is equal to 2R capital R upon 1 plus R square. And if reflectivity is 0.5, then visibility V will obtain 0.8. And if capital R is equal to 1, then we will obtain 2R. R in place of R we can put 1. If reflectivity is 100%, then 2 into 1 upon 1 plus 1 square, that is 2 upon 2, that is 1. 1 means 100%, visibility is 100%. So as the reflectivity of the inner faces of both parallel glass plates in Fabry-Perot interferometer increases, then visibility of fringes will also increase. That is, intensity of light is, that means resultant intensity of light also increases. So if reflectivity capital R is equal to 0.5, that is 50%, visibility is, using equation 7 for visibility, that is V is equal to capital V is equal to 2R upon 1 plus R square. We will obtain 2 into 0.5 upon 1 plus 0.5 whole square, that is 1 upon 2 into 0.5 is 1 upon 1 plus 0.5 square, that is 0.25, that is 1 upon 1 plus 0.25 is 1.25. So we can write it as 100 upon 125, and it is 0.8. And if reflectivity is 1, that is 100%, then from equation 7 for visibility we have V equals to 2 into 1 upon 1 plus 1 square, that is 2 upon 2, that is 1, that is visibility increases, that is visibility is 1 means 100%. That means as reflectivity of the inner faces of the two parallel glass plates increases, then visibility of fringes also increases, that is resultant intensity of light also increases. In last, we have to discuss sharpness of Fabry-Perot fringes obtained in or formed in Fabry-Perot interferometer and comparison of Fabry-Perot interferometer with Michelson interferometer. First of all, sharpness of Fabry-Perot fringes formed in Fabry-Perot interferometer. In the last video, that is video related to Fabry-Perot interferometer part 1, we have already discussed that in Fabry-Perot interferometer, circular bright fringes or circular bright rings are formed on a dark background, that is on a black screen as observed by the eyepiece of a telescope. Fabry-Perot interferometer में सर्कुलर ब्राइट फ्रिंजेज और सर्कुलर ब्राइट रिंग्स फॉर्म होता है डार्क बैकग्राउंड पर या ब्लैक स्क्रीन पर. If we plot intensity of transmitted light, that is capital I, against phase angles delta for different values of
reflectivity capital R, a set of curves is obtained as shown in figure 2. These curves show that larger the value of reflectivity of glass plates, the more rapid is fall of intensity of light on either side of the maximum as shown in figure 2. That is, higher the reflectivity of the glass plates, sharper are the interference bright fringes. फिगर 2 में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट एंड फेज एंगल के बीच में ग्राफ प्लॉट रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें यह क्लियर है कि जैसे जैसे रिफ्लेक्टिविटी ग्लास प्लेट्स का इंक्रीज करता है, वैसे वैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी के दोनों साइड्स में इंटेंसिटी ऑफ लाइट का तेजी से फॉल होता है। जैसे कर्व का फॉल ज़्यादा हो रहा है, जैसे रिफ्लेक्टिविटी जब 5% है, दैट इज R इक्वल टू 0.05, तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम इंटेंसिटी के दोनों साइड्स में देयर आर टू पोजिशंस, टू वैल्यूज ऑफ फेज एंगल्स 2n पाई एंड 2n+1 पाई। तो रिफ्लेक्टिविटी जब 5% है ग्लास प्लेट्स का, तो फॉल ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी के दोनों साइड में, मैक्सिमम इंटेंसिटी पिक वैल्यू है जो डॉटेड से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये पिक है मैक्सिमम इंटेंसिटी का, टू प्लेसेस फॉर टू फेज एंगल्स 2n पाई एंड 2n+1 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो कर्व है उसका फॉल कम है, लेकिन जैसे जैसे रिफ्लेक्टिविटी ग्लास प्लेट्स का बढ़ता जाता है, एज रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ग्लास प्लेट्स इंक्रीजेज, दैट इज नाउ R इज 25%, देन फॉल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मैक्सिमम इज मोर रैपिड। अब यहाँ पर 25% रिफ्लेक्टिविटी के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट में मैक्सिमम इंटेंसिटी के दोनों साइड्स में कर्व का फॉल ज़्यादा है, दैट इज फॉल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर रैपिड है। और जब रिफ्लेक्टिविटी ग्लास प्लेट्स का 50% हो जाता है, तो फॉल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन आइदर साइड ऑफ द मैक्सिमम इज नाउ मोर रैपिड देन दैट ऑफ द रिफ्लेक्टिविटी R इज इक्वल टू 25%। और जब रिफ्लेक्टिविटी 95% हो जाता है, दैट इज R इज इक्वल टू 0.95, तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम इंटेंसिटी के दोनों साइड्स में इंटेंसिटी का फॉल सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। इफ R इज 95%, दैट इज कैपिटल R इज इक्वल टू 0.95, देन फॉल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन आइदर साइड ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज मोस्ट, दैट इज फॉर 95%। कर्व सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट में फॉल है, का मतलब कर्व सबसे ज़्यादा यहाँ पर नीचे गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार क्लियर है कि रिफ्लेक्टिविटी, इफ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ग्लास प्लेट्स इज मोर देन शार्पर आर द इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेज। हमने विजिबिलिटी का एक्सप्रेशन में भी देखा था कि जब रिफ्लेक्टिविटी 0.5 था, दैट इज 50% था, तो विजिबिलिटी 0.8 था। लेकिन जैसे ही रिफ्लेक्टिविटी 100% 1 किया गया, तो विजिबिलिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज वहाँ उस सिचुएशन में जब रिफ्लेक्टिविटी 1 था, तो विजिबिलिटी ऑफ लाइट फ्रिंजेज भी इंक्रीज होकर के 1 हो गया, 100% हो गया। सो इफ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द ग्लास प्लेट्स इज मोर, देन मोर शार्पर आर द, दैट इज शार्पनेस ऑफ द इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेज is also more. Now, comparison of Fabry-Perot interferometer with Michelson interferometer. There are two important differences between the fringes formed in Fabry-Perot interferometer and that of
that of in Michelson interferometer. First difference is the Fabry-Perot fringes formed by multiple beam interference of transmitted waves or transmitted beams are much sharper than Michelson interferometer fringes. Fabry-Perot interferometer में जो फ्रिंजेज फॉर्म होता है तो उसका ब्राइटनेस और ज़्यादा शार्प होता है, जैसा कि देखा जा सकता है इस ग्राफ में भी कि रिफ्लेक्टिविटी ग्लास प्लेट्स की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही शार्पर होगा इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेज, उतना ही शार्पर होगा ब्राइट फ्रिंजेज जो ऑब्टेन होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में. तो फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर में मल्टीपल बीम रिफ्लेक्शन के कारण जो ट्रांसमिटेड बीम ऑब्टेन्ड होता है उसके सुपरपोजिशन के कारण जो फ्रिंजेज ऑब्टेन होते हैं वे ज़्यादा ब्राइटर होते हैं, अधिक मोर ब्राइटर होते हैं इन कंपेरिजन टू फ्रिंजेज फॉर्म्ड इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर. And second important difference is Fabry-Perot interferometer is very suitable for the study of fine structure of spectral lines, as separate pattern of each spectral line is obtained in Fabry-Perot interferometer. Suppose if two closed sodium lines, that is D1 line and D2 line, that is two closed spectral lines of monochromatic light source sodium, then each spectral line forms its own patterns. तो सोडियम D1 एंड D2 लाइन्स में को जब ऑब्जर्व किया जाता है फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर से तो उस सिचुएशन में दोनों लाइन्स D1 एंड D2 लाइन्स अपना अलग अलग पैटर्न फॉर्म करता है, अलग अलग फ्रिंजेज फॉर्म करता है, सर्कुलर ब्राइट फ्रिंजेज और सर्कुलर ब्राइट रिंग्स, जिसको एक दूसरे से क्लियरली देखा जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, दोनों को अलग अलग सेपरेट करके देखा जा सकता है. D1 लाइन, सोडियम D1 लाइन एंड D2 लाइन बोथ आर टू क्लोज स्पेक्ट्रल लाइन्स. ओनली डिफरेंस इन वेवलेंथ इज 6 एंगस्ट्रम, बट बोथ स्पेक्ट्रल लाइन्स D1 and D2 lines form its own interference pattern, and circular bright fringes so obtained are clearly visible, clearly separated, but it is not so in the fringes formed in Michelson interferometer. लेकिन माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर सेपरेट पैटर्न्स ऑफ टू क्लोज स्पेक्ट्रल लाइन्स इज नॉट ऑब्टेन्ड. माइकलसन इंटरफेरोमीटर में दो सटे हुए, दो एकदम निकट, बिल्कुल निकट जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होंगे उनके सेपरेट पैटर्न फॉर्म नहीं हो पाते. सो इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर सेपरेट पैटर्न्स ऑफ टू क्लोज स्पेक्ट्रल लाइन्स is not obtained, and so we cannot see interference fringes formed in Michelson interferometer clearly, which is separate or distinct in case of Fabry-Perot interferometer. Hence it is clear that Fabry-Perot interferometer is superior to that of the Michelson interferometer. Now this video is completed.